Hello, welcome to Surekha's chemistry class. Now, this is the second volume of quick revision of chapter solution of class 12th. So, two colligative properties I have discussed in my previous video, and today I am going to discuss the third colligative property, that is elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Now, what is boiling point? Boiling point is the temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. This is what we call boiling point. When the boiling point is elevated, when non-volatile solute is added to solvent, then its boiling point increases. Why? Because its boiling point increases. Because on adding non-volatile solute to the solvent, its vapor pressure decreases. Because vapor pressure decreases. How it is decreased? I have told you in my previous video. So, vapor pressure decreases and boiling point increases. Now, elevation in boiling point is known as delta Tb. Delta Tb is equal to boiling point of solution minus boiling point of the pure solvent. Delta Tb. Now, delta Tb is directly proportional to the molarity of solution. आप जितना नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालेंगे उस हिसाब से तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. सो कंसंट्रेशन हियर इज टर्म्ड इन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी. So to remove this sign, we have to introduce one constant, Kb into m. What is this Kb? This Kb is ebullioscopic constant or molar elevation constant. What is its definition? Definition of any constant is very simple. What is its definition? It is equal to this when this is 1. So, Kb is equal to delta Tb, means elevation in boiling point when molarity of solution is taken to be 1 or unity. Now, what is this molarity? Let us try to open this. Delta Tb is equal to Kb into given mass of solute upon molar mass into 1000 upon capital W. Capital W is the weight of solvent in grams. So, this is what we call the expression of delta Tb. Well, graphically, it is shown like this. Vapor pressure on this axis and temperature. This is atmospheric pressure. Now, the curves of solute and solvent. This is higher boiling point. So, this is the curve for solvent. And this is, it is solution and it is solvent. Because when, let me write it clearly, yes, it is for solution, this curve. Because the boiling point of solution is higher and that of the pure solvent is lesser. So, this is the boiling point of pure solvent and this is the boiling point of solution. The difference between these two is known as delta Tb, and delta Tb is directly proportional to the concentration of solution. So graphically it is shown like this. So many numericals are there in your NCERTs also. After completing this lecture on these colligative properties, I will discuss numericals also. So, elevation in boiling point, when non-volatile solute is added to solvent, its boiling point increases because its vapor pressure decreases. And delta Tb is directly proportional to m. And this is constant of proportionality, molar elevation constant or ebullioscopic constant. Its definition, Kb is equal to delta Tb when the molarity of solution is taken to be 1. Similarly, the fourth colligative property is depression in freezing point. What is freezing point? Freezing point is the temperature at which the vapor pressure of liquid state
becomes equal to the vapor pressure of solid form. As we all know, when the non-volatile solute is added to any solvent, its freezing point decreases. Why? Because once again the vapor pressure decreases, because vapor pressure decreases of the solution. So graphically it is shown like this. You know, what does this indicate? This indicates the solid state and this indicates the liquid state, and this is the freezing point. Whose freezing point is more? Of the pure solvent. Of solution it is less. So temperature is taken on this axis and vapor pressure on this axis. This is the freezing point of solution and this is the freezing point of pure solvent. The difference between these two is known as delta TF. Delta TF is equal to the freezing point of pure solvent minus freezing point of solution. And delta TF is once again is directly proportional to molarity, because if the concentration of solute is high, the depression in freezing point is more. So delta TF is directly proportional to the molarity, or we can say delta TF equal to Kf into M. What is this Kf? Just like Kb, it is cryoscopic constant, or we call it molar depression constant. What is its definition? Similarly, Kf is equal to, or it is defined as, the depression in freezing point when the molarity of solution is taken to be unity. Just express this thing in words. This will be the definition of Kf. So Kf is equal to delta Tf when the molarity of solution is taken to be 1 or unity. And mathematically also delta Tf equal to Kf into W upon M into 1000 upon capital W. Capital W is the weight of solvent in grams, weight of the solute, molar mass of solute, and 1000 is just introduced to change the weight of solvent in grams. So this is the final expression of delta TF, right? And what are the applications of this depression and freezing point? You know, snow on the roads. Snow on roads is removed by spraying salts. What will the salts do? The salt will actually decrease the freezing point of snow and the snow melts away, right? So snow on the road is removed by spraying salts, and ethylene glycol is working as antifreeze. Why? Because it decreases the freezing point of solution. Where it is used? It is used in the radiators of vehicles on the hilly areas. Actually, on the hilly areas, water gets frozen and radiator may be damaged. So, in radiator, ethylene glycol is added along with water because it decreases the freezing point and damage will not happen to the radiator, right? So, these are the colligative properties. In my previous video, I have told you the colligative properties are basically studied to calculate the molar mass of solute. These are basically used to calculate the molar mass of solute, right? So we can use 4 colligative properties. First was relative lowering of vapor pressure. Second was osmotic pressure. Third is elevation in boiling point. Fourth is depression in freezing point. So these colligative properties are used to find out the molar mass of solute. But suddenly one exception arises. What's that?
abnormal molar mass. What is this topic basically? Abnormal molar mass. Actually, I've just told you I have added urea to water, and I used one colligative property to calculate the molar mass of urea. So the molar mass of urea came out to be same, whatever it was, right? Then I added NaCl to water and calculated colligative property. By colligative property, I calculated the molar mass of NaCl, but it was just the half of actual value. What does it mean? It means NaCl has shown abnormal molar mass. इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी सॉल्ट वाटर में डालते हैं, अगर वो डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाता है तो उसका मोलर मास वो नहीं आता जो सचमुच होता है. ऐसे सब्सटेंसेस जिनका मोलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करने पर सेम नहीं आता, अलग आता है, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं दे शो एबनॉर्मल मोलर मास. सो एबनॉर्मल मोलर मास इज शोन बाय those solutes which either dissociate or associate in solution. It means we can't use colligative properties to calculate the molar mass of such kind of solutes. No, we can calculate. Van 't Hoff कहता है मैं हूं ना, मैं हूं जब तक तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ये वैन 't Hoff कौन है? वैन 't Hoff factor is represented by I. What is this I? This is the molar mass normal and divided by the molar mass observed. Or colligative property is just the reverse of molar mass. So colligative properties observed and colligative properties normal. This is what we call I. तो I करेगा क्या? वैन 't Hoff कहता है डोंट वरी, आपका NaCl का मोलर मास ठीक नहीं आ रहा था, एबनॉर्मल आ रहा था, डोंट वरी. जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करोगे तो उसमें I को इंट्रोड्यूस कर देना. वेल, इफ एनी सॉल्यूट शोज dissociation or association, in that case the colligative properties will be written like this. Phospho is equal to Xb, you all know, but in case of such solutes which show abnormal molar mass, I will be introduced. कहते I लगा दो साथ में. और दूसरी थी colligative property, osmotic pressure pi I CRT, तो कहते हैं I लगा दो. डेल्टा TF इक्वल टू I KF इंटू M, और डेल्टा TP इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M. वैन 't Hoff कहता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं, और जब भी आपको लगे कोई सोल्यूट जो है डिसोसिएशन या एसोसिएशन शो कर रहा है तो आप I लगा दो, राइट? तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं. बाय द वे, what is the value of I for NaCl, CaCl2, KCl, K4, FeCN whole 6? What is the value of I for these? Now, if they dissociate completely, अगर तो इनकी dissociation 100% है, then in that case I will be equal to 2, because NaCl in going into water will give 2 ions, Na plus and Cl negative. This will furnish 3 ions, this will furnish 2 ions, and this will furnish 5 ions. If I add this potassium ferrocyanide to water, it will be dissociated to 4 ions. कैसे? 4 पोटाशियम हो गए, ये अलग अलग हो जाएंगे. ये जो whatever is kept in the bracket ये इकट्ठी रहेगी, because इनका जीना मरना एक संग होता है, तो ये डिसोसिएट नहीं होगा. टोटल कितनी स्पीशीज होगी? 5. अगर 100% डिसोसिएशन होगा तो I का फॉर्मूला होगा द नंबर ऑफ आयोन्स प्रेजेंट इन अ सिंगल फॉर्मूला, राइट? अगर न्यूमेरिकल में लिखा हो
कि what is I if K4 Fe CN6 shows 50% dissociation. क्या अब भी आंसर 5 आएगा? बिल्कुल नहीं. 50% actually alpha है. What is alpha? Degree of dissociation. In such cases, the formula of I is equal to 1 minus alpha plus n alpha. What is 1? A constant. What is alpha here? 50% means 50 by 100 means 0.5. So alpha की value है 0.5 plus. What is n here? The number of ions in the given formula, which it will furnish in aqueous solution. So 4 plus 1, 5. So value of n is 5 into alpha is 0.5. Right? तो हम I की value calculate कर लेंगे. Right? तो अगर degree of dissociation is given, in that case the formula will be 1 minus alpha plus n alpha. Similarly, in case of association, if 100% association, then I is equal to 1 by n. What is this n? n is the number of species associated. जितने मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाके कंबाइन करके एक हो जाएंगे उसे हम कहेंगे n. डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन दैट इज अल्फा. और अगर लिखा होगा कि इसका मीनिंग क्या है, सी इफ आई से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इफ एनी सोल्यूट शोज डाइमिराइजेशन और टेट्रामिराइजेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइमिराइजेशन? 2 मॉलिक्यूल मिलके एक हो गए हैं. टेट्रामिराइजेशन 4 मॉलिक्यूल मिलके एक हो गए हैं. तो इस केस में I की वैल्यू होगी 1/2 और इस केस में I की वैल्यू होगी 1/4. What if degree of dissociation is given? Suppose एक न्यूमेरिकल आया कि what is the value of I if solute shows 50%, चलो 80 ले लेते हैं, दोनों बार 50 नहीं लेते, 80% ट्राइमेराइजेशन. राइट, 80% ट्राइमेराइजेशन. तो I की वैल्यू होगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n. हियर व्हाट इज अल्फा? 80 by 100 0.8 प्लस व्हाट इज अल्फा? 0.8. व्हाट इज n? ट्राइमेराइजेशन यानी कि डिवाइडेड बाय 3. So this is how we can calculate I. Abnormal molar mass is shown by those solute which either dissociate or associate in the aqueous solution. तो इनका जो मोलर मास है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करने पर वो नहीं आता जो सचमुच होता है. देखो NaCl का मोलर मास कितना होता है? 58.5 होता है. और अगर मैं इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इसका मोलर मास निकालूं तो हाफ आएगा, मीन्स गलत आएगा यानी कि एबनॉर्मल आएगा. फिर अगला सवाल उठा कि एबनॉर्मल आता क्यों है? क्योंकि NaCl वाटर में जाके 2 में टूट जाता है. अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो ब्लाइंड है, बोलती है कितने लोग आए हैं? 2. अब हमने बोला यार हमने तो 1 डाला है तो 2 आए हैं, तो वो 2 देखती है बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सिर्फ गिनना आता है, देखना नहीं आता, ब्लाइंड है वो. तो इसीलिए इसका मोलर मास ठीक नहीं आया. तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? वैन ऑफ कहता है डोंट वरी, मैं हूं, आई लगा दो. अब आई कौन है? आई या तो I इक्वल टू n है इन केस ऑफ 100% डिसोसिएशन, या फिर I ये है वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर I 1/n है इन केस ऑफ एसोसिएशन, या फिर I ये है. इन चारों में से कोई एक फॉर्मूला I का लगेगा और इस फॉर्मूले में फिट कर दो. आपका मोलर मास अब आपका नहीं, आपके सॉल्यूट का मोलर मास अब एबनॉर्मल नहीं आएगा. राइट. सो वन मोर क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू आस्क यू.
The question is, which of the following has highest melting point or freezing point? Highest boiling point, ये हमारा highest है shortcut, boiling point, और third one is highest osmotic pressure. Okay, first is 1 molar glucose, B 1 molar NaCl, C 1 molar CaCl2, D 1 molar K4FeCN whole 6 and this potassium ferrocyanide. इन सब में से बॉइलिंग पॉइंट किसका है? देखो, ग्लूकोज वाटर में जाता है, डिसोसिएट नहीं होता, तो इसकी जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वाटर में विल रिमेन द सेम. NaCl वाटर में जाके 2 में टूट जाएगा, यानी कि 1 मोल का 2 मोल बन जाएंगे. राइट नाउ आई हैव टोल्ड यू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ब्लाइंड, तो उसको 2 दिखेंगे. इस केस में 3 मोलर हो जाएगा कंसंट्रेशन, और इस केस में 4 और 1 5 मोलर. बताओ सबसे ज्यादा पार्टिकल्स की संख्या किस में है? लास्ट वाले में. तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना एलिवेट करेगा, और जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना डिक्रीज करेगा. राइट, तो उल्टा हो जाएगा. हायर द नंबर ऑफ particles, higher is the boiling point and osmotic pressure, but higher the number of particles, lower is the freezing point. Right? तो आंसर क्या है पहले वाले का? जिसमें पार्टिकल्स की संख्या कम होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. तो फर्स्ट का आंसर है 1 मोलर ग्लूकोज, इसका हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा. राइट, और सेकंड का आंसर है K4FeCN whole 6. क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कम. ओके, सो इसका हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर भी होगा और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट भी होगा. राइट, एक और क्वेश्चन है, जब हम KI में HgI2 मिक्स करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सी, KI on going into water will be dissociated to 2 and HgI2 being covalent is not dissociated. जब आप इनको ऐड करते हो तो हमें स्पीशीज मिलती है K2HgI4. It will remain together and K2, total 3 species are there, but before adding this was giving 4 species. 2 KI से 4 पार्टिकल मिल रहे थे, एक इससे 5, और इनको मिक्स करते हैं तो 5 पार्टिकल के 3 पार्टिकल बन जाते हैं. पार्टिकल की संख्या डिक्रीज हो गई तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? मैंने अभी बताया, पार्टिकल्स जितने कम होंगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा. तो फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज होगा. सो दिस इज द क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ क्लास 12th. तो अब हम इसका एक एक न्यूमेरिकल्स करते हैं एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से. See, the question is, calculate, this is the question I am taking from NCERT book, calculate osmotic pressure of solution prepared by adding 1.0 gram polymer of molar mass 185,000 in 450 ml of water,
at 37 degree C. क्वेश्चन है, यू हैव टू गिव आंसर इन पास्कल्स. ठीक है. ऑस्मोटिक प्रेशर. देखो, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, पहले तो ये दिमाग लगाओ कि इसमें हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है. ऑफ कोर्स ऑस्मोटिक प्रेशर है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ही निकालना होगा, तो फॉर्मूला ये लगेगा. एंड वी ऑल नो दिस इज इक्वल टू n अपॉन वी आर टी. और अगर n को फर्दर ओपन करें, w अपॉन m इंटू आर टी अपॉन वी. टेक केयर ऑफ वन थिंग, द वेरी फर्स्ट थिंग, वॉल्यूम शुड बी टेकन इन लीटर, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन. आर की वैल्यू है हमारी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. ओके. अगर हम आर की वैल्यू ये वाली यूज करते हैं तो प्रेशर विल कम आउट इन एटमॉस्फेयर, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि पास्कल में आंसर देना है. कोई नहीं, पहले एटमॉस्फेयर में निकाल लेते हैं. सो पाई इज इक्वल टू W1, मोलर मास 185,000, आर टी 37 में 273 ऐड कर दो, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट विल बिकम 310. Volume is 450 ml. It is to be converted into liters. So 450 into 1000. जो भी आपका आंसर आएगा उसको 10 to the power 5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर पास्कल में आ जाएगा, क्योंकि 1 atmosphere is nearly equal to 10 to the power 5 pascals approximately. So we can multiply it by 10 to the power 5 and you can solve this numerical. 0.0821 को आप 0.08 यानी कि 8/100 ले सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए, राइट. सो दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर. नेक्स्ट इज boiling point of water at 750 mm of Hg is 99.63 degrees C, and how much sucrose is to be added in 500 gram of water such that it boils at 100 degrees C, right. देखो, इस क्वेश्चन में what we have to do, boiling point word is given and it says कि boiling point pure water का इतना है, हम कितना सुक्रोज डालें कि boiling point इतना हो जाए, यानी कि एलिवेशन की बात कर रहा है. फॉर्मूला तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलैरिटी का फॉर्मूला. यस, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हाउ मच सुक्रोज, यानी कि हमें W निकालना है, राइट. केबी शुड ऑल्सो बी गिवन. केबी फॉर वाटर इज 52. Kb for water is 0.52 Kelvin kilogram per mole. Kb 0.52 Kelvin kilogram per mole. So Kb will be given delta Tb 100 minus 99.63. दोनों डिग्री सी में है तो हम माइनस कर सकते हैं, या तो दोनों केल्विन में होते या डिग्री में, पर डेल्टा टी तो सेम ही आना है, इक्वल टू 0.52. W is to be calculate. मोलर मास ऑफ सुक्रोज जो होता है दैट इज 342 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इज 500 ग्राम, क्योंकि दिस इज द weight of solvent in grams. So this is how you can calculate W. So simple. What we have to do,
we have to think about the formula first, then we have to put the values one by one, and don't miss the calculation, sorry, नहीं तो half marks मिलेगा. आप कैलकुलेशन करिए, जैसे भी कर सकते हैं करिए, बट यू मस्ट डू इट एंड राइट डाउन द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीजिंग पॉइंट वाला ले लेते हैं कोई क्वेश्चन. Calculate freezing point depression and freezing point of solution if 45 gram ethylene glycol C2H6O2 is mixed in 600 gram of water, right? And Kf given is 1.86 Kelvin kilogram per mole, right? अब तो आप समझ ही गए होंगे फॉर्मूला कौन सा लगाना है. डायरेक्टली फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज आस्क्ड, तो आप लगाएंगे डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू गिवन मास, मोलर मास, 1000 upon big W. Delta TF we have to calculate. KF is given 1.86, given mass 45 gram, and the molar mass we can calculate, means 24 plus 6 plus 32. 6, 4, 10, 2, 12, 3, 2, 5, 62 is the molar mass into 1000 upon 600 gram, right? So this is how you can calculate delta TF. जब delta TF निकल आएगा उसको 0 डिग्री में से माइनस कर देना. That will be the depression in freezing point. So this is how you can calculate your depression in freezing point. So quickly you have revised your this whole chapter, and you can give your suggestions and you can give your comments also. And if you want to ask any question particularly on this, you can mail me. That is given in the description. All the best.